Hello everyone, a warm welcome to all of you in the today's top 50 MCQ session on EduTap, in which we are going to cover the top 50 MCQs from the month of January 2023. And guys, this is the part 3 of this particular series. So we have already covered the part 1 and part 2. If you have not watched those sessions, you can just go back and watch those sessions, but after covering this particular session. And when I talk about the today's session, today we are going to cover the top 50 general awareness MCQs which are really relevant for RBI Grade B, NABARD Grade A, as well as the SEBI Grade A exam. So guys, before starting the session, I would like to tell you that this session is a revision session of what we have covered in the past 1 week in the fast track sessions. So ये एक revision session है, and guys, all of you are really required to answer the questions in the comment section, okay? But before starting the session, we have a very good news for all of you that we at EduTap are providing a comprehensive guidebook for the aspirants of RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A exam. Okay, and guys, when I talk about these guidebooks are a very beautiful guidebooks, and these guidebooks provides you a definitive answer to your queries which pops up in your mind as an aspirant. And these questions can be about the body itself in which you are targeting to enter. It can be about the exam, it can be about the preparation. For example, when I talk about the Reserve Bank of India, so what exactly the role that RBI plays in the Indian economy. The question can be about the exam as well, like what is the detailed syllabus of the exam, what are the pattern of the exam, what are the different cutoffs for the previous years. And when I talk about the preparation, so what are the sources that you must follow in order to prepare for this particular exam, how you can clear this particular exam. So all the answers to such kind of questions which pops up in your mind as an aspirant will be answered by these guidebooks. So what are you waiting for? Kindly download these guidebooks from the link given in the description of this particular video. Okay, so now let's back to the session. And guys, today we are going to cover 50 MCQs, and all of you are required to calculate your scores. तो अपने scores को calculate कीजिए out of 50 what exactly your score was, क्योंकि उस score के बेसिस पर ही, उसके एनालिसिस पर यू कैन जस्ट एनालाइज कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं. तो वीक एरियाज को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्ट्रॉन्ग एरियाज को स्ट्रॉन्ग रखना है. ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ. एंड हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर टुडे सेशन. So here is the very first question, guys, and all of you are required to tell me the right answer in the comment section of this particular video. So the question is, Union Cabinet has approved the setting up of 3 national multi-level multi-state cooperative societies. So here you can see कि Union Cabinet ने approve किया है 3 national level multi-state cooperative societies को, which are going to promote the exports and organic products. तो ये आपको बताना है कि ये जो 3 नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडीज हैं, ये बेसिकली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो कि आपको बताना है कि कौन से ईयर के अंदर ये एक्ट था, जिसके अंदर ये 3 हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पर अप्रूवल मिला है फॉर देयर सेटिंग अप. So please tell me the right answer in the comment section, guys. And so let me tell you some brief information about this, that when I talk about the cooperatives, so in India there are almost around 8.5 lakh cooperatives which are having around 29 crore members, and these are mainly from the rural areas. And this step of the government is going to benefit these people from the rural areas, and that's how it is really going to impact them. So when I talk about the right answer is option D, that is 2002. So when I talk about कि ये जो 3 societies हैं, ये इनका नाम क्या है? So guys, these 3 societies basically will be for the export society, organic society and the seed society. When I talk about the export, so this export society will basically be an umbrella organization which is really going to unlock the potential of Indian cooperatives in the exports. When I talk about the organic society, this will basically, what it will do, it will basically promote the organic products. When I talk about the seed society, तो seed society क्या काम करेगी? It will help to reduce the yield gap and increase the productivity, and that's how these particular societies are going to impact. Now moving on to the next question, which is here on your screen. Indian High Commission has signed an MOU to establish a Hindi chair at सबरगामुवा यूनिवर्सिटी. और आपको बताना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये इसमें से कौन सी कंट्री के अंदर है. अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन एक MOU साइन किया है इस पर्टिकुलर एक हिंदी चेयर बनाने के लिए इस यूनिवर्सिटी में. आपको बताना है कि ये यूनिवर्सिटी कहां पर है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज श्रीलंका. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज रिलीज्ड द 18th एडिशन ऑफ the Global Risk Report 2023. See guys, we always tell you
that whenever a report is being released, what are the different dimensions that you are required to cover? See, there are 5 dimensions. The first one is the releasing body. रिलीजिंग बॉडी पर ही ये क्वेश्चन है. सेकंड वन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द रिपोर्ट. थर्ड वन इज व्हाट इज एग्जैक्टली द इंपॉर्टेंट रैंक्स व्हिच आर बीइंग मेंशन्ड. सो देयर आर सम रिपोर्ट्स जहां पर रैंक्स होती हैं और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जहां पर कोई रैंकिंग नहीं होती, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन इफ इट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट. एंड गाइस, फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड फिफ्थ वन इज द रिकमेंडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट. तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इट इज वेरी ऑन अ बेसिक डायमेंशन, दैट इज द रिलीजिंग बॉडी of this report, that is Global Risk Report 2023. And here guys, the right answer to the question is option D, that is World Economic Forum. अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये बताती है दैट द वर्ल्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन द अपकमिंग 2 years. तो अगले आने वाले 2 साल में वर्ल्ड को प्रिपेयर रहना चाहिए फॉर द नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. और यहां पर जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहां पर न्यूज में है, तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवोस मीटिंग है 2023 के अंदर, तो यहां पर उसकी थीम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज cooperation in a fragmented world. That is basically the theme of this particular meeting that is going to held in the upcoming year. Okay, so okay, that was all. Now when I talk about the important risk, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि वो कौन से रिस्क हैं जो कि वर्ल्ड फेस करने वाला है, so when I talk about the top 2 risk, these are basically failure to mitigate the climate change, and the other one is the failure of climate change adaptation. So these are the 2 risks that you must remember from the exam point of view, because these are the 2 most severe risks which are being given by this particular report. Now you can also see from this particular slide that what is exactly are the top 10 risks that the world is going to face in the next 2 years and in the upcoming decade, that is in the next 10 years. So here you can see the whole list is presented before you. You can just go through them on your own. Now let us move on to the next question. So अगला क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन है एज पर अ न्यू स्टडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ. द क्वेश्चन इज 3700 इंडियन डैम्स विल लूज 26% स्टोरेज कैपेसिटी. तो जो इंडियन डैम्स हैं वो 26% अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को लूज करने वाले हैं, बट बाय विच ईयर दिस विल हैपन एज पर दिस पर्टिकुलर स्टडी, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज 2050. So 2050 तक Indian dams, 3700 Indian dams will lose the 26% of their storage capacity. That is really going to become a very very serious concern for the India. Now moving on to the next question. So agla question is once again on a report, and here you can see the question is basically, as per a report by the aviation analytics firm OAG, when it comes to the on-time performance in 2022, Indigo was ranked dash, while Coimbatore Airport is at dash position. सो लेट मी टेल यू हियर, इंडिगो की अगर हम बात करें तो इंडिगो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे था व्हेन वी टॉक अबाउट एयरलाइंस, ठीक है जी. बट व्हेन आई टॉक अबाउट द कोयम्बटूर, सो इट वाज इन द लिस्ट, इट इज द कोयम्बटूर एयरपोर्ट विच वाज इन द पर्टिकुलर लिस्ट. तो यहाँ पर एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो एयरलाइंस की लिस्ट में इंडिगो वाज बेसिकली ऑन द 15th पोजीशन. कोयम्बटूर एयरपोर्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट द टॉप 20 एयरपोर्ट्स, तो उसके अंदर कोयम्बटूर एयरपोर्ट वाज ऑन द 13th पोजीशन. सो आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर मिसिंग हियर, दैट इज सी, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट, बट रिपोर्ट का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है. तो रिपोर्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए क्या है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, द रिपोर्ट इज पंक्चुअलिटी लीग 2023. So this is basically the name of the report जो कि रिलीज की गई है और जिसकी फाइंडिंग पे ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है जी. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप ट्रैकर CY 2022 report published by PwC India, the startup funding in India has dropped to what percent to USD 24 billion in 2022. So यहाँ पर काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस. जिस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर डिस्कशन की जरूरत होगी, वी विल डिस्कस द आंसर्स इन डिटेल टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, बट यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड इट डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ डिस्कशन फ्रॉम आवर एंड. द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज 33%, दैट इज द ड्रॉप. And here you can see that when I talk about the startup funding in India, it will be USD 24 billion in 2022.
ठीक है जी, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एनपीसीआई ने यहाँ पर अलाउ किया है यूपीआई ट्रांजैक्शंस फॉर द नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स लिंक टू मोबाइल नंबर्स ऑफ डैश कंट्रीज. तो कितनी कंट्रीज के लिए बेसिकली इसको अलाउ किया है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर. So guys, here it is very very direct. The right answer is option A, that is 10. And let me tell you that when you see such kind of organizations in the news, for example NPCI न्यूज के अंदर है, तो आप अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार एनपीसीआई के बारे में ऐसा क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में और आ सकता है. सो इट कैन बी अबाउट कि एमडी एंड सीईओ एनपीसीआई के कौन है, दैट इज बेसिकली मिस्टर दिलीप आसबी. ठीक है जी. तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पुट ऑन किए जा सकते हैं फ्रॉम द करंट पार्ट. तो आप देख सकते हो कि अगर न्यूज आपको दे दी जाएगी और एक स्टैटिक क्वेश्चन उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बन सकता है, तो ऐसी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर कीजिए अपने व्हेनेवर यू आर रीडिंग सच काइंड ऑफ न्यूज आर्टिकल्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, एग्जिम बैंक ने रेज किया है कितना अमाउंट थ्रू 10 ईयर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशू. यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी कि एग्जिम बैंक ने रिसेंटली कितना अमाउंट रेज किया है थ्रू अ 10 ईयर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशू. So guys, when I talk about this particular issuance, this issuance makes the Exim Bank the first Indian issuer to open the market for dollar and sustainability bond issue, and this has been done by the Exim Bank as a part of its ESG framework, that is environmental social governance framework. और यहाँ पर एक और important चीज है guys, that when I talk about the sustainability bond, these are the bonds the proceeds of which are used to finance or refinance the combination of both green and the social project activities. तो green और social project activities दोनों के लिए इसको यूज किया जाता है. And when I talk about the right answer, it is option B, that is USD 1 billion. So this is the right answer. Now move on to the next question. RITES has signed a MOU with which of the following institutes to strengthen and develop a sustainable future by transforming to green. तो यहाँ पर guys हम आपको हमेशा कहते हैं whenever there is an MOU, तो MOU जब भी होगा तो दो चीजें याद रखना बेहद जरूरी है. The first one is the parties which are involved, दो पार्टीज जिसके बीच में ये MOU साइन हुआ है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द एम ऑफ दैट MOU. तो एम आप यहाँ पर देख सकते हो, द एम इज टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप अ सस्टेनेबल फ्यूचर बाय ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन. और पार्टीज की बात करी जाए तो एक पार्टी है राइट्स, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट पार्टी, इट इज बेसिकली option C, that is IIT Kanpur. That is the right answer to this question. Now the next question. So NASA's James Webb Space Telescope has discovered the first Earth-like exoplanet. और आपको बताना है कि बेसिकली इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है. ये जो पहला अर्थ जैसा एक्सोप्लैनेट है इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है. And the right answer to the question is LHS 475b. That is what the right answer to this question is. Now the next question. So world के longest river cruise जो कि अभी स्टार्ट उस अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, that is MV गंगा विलासी. गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. That is first of all ये जो जर्नी है, ये जर्नी किस चीज के बीच में होने वाली है, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसका नाम क्या है. ये जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है इसका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज MV गंगा विलास. अगर हम बात करें कि जर्नी कहां से शुरू करने वाला है, दैट इज बेसिकली ऑप्शन सी, दैट इज वाराणसी. एंड आपको मुझे बताना है होमवर्क के अंदर, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका जो टर्मिनेशन पॉइंट है, एंड पॉइंट है इस जर्नी का, वो कौन सी प्लेस है. दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन इज यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है टू रीनेम द नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता. उसका यहाँ पर नाम चेंज किया जा रहा है, और वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर नाम चेंज किया जा रहा है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर. एंड हियर यू can see that it will be renamed as Dash National Institute of Water and Sanitation. And here guys, when I talk about the personality on which this particular part is being renamed, so that particular person was basically one of the Jan Sangh founder, and the name of that person is option A, that is Dr. Shyama Prasad Mukherjee. I hope this is clear guys. Now let's move on to the next question. अगला question आपकी screen पर from a very very important scheme, that is PM Swanidhi scheme, which provides a platform for the financial inclusion by facilitating the dash to carry out digital transactions. तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के टाइम पर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था, एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज बेसिकली लॉन्च फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स, एंड विच इज आल्सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो अब ये स्कीम क्योंकि न्यूज के अंदर थी तो हमें न्यूज इस पर्टिकुलर स्कीम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए. एंड हियर यू कैन सी व्हेन आई टॉक अबाउट द लॉन्च ईयर ऑफ द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2020. उसकी नोडल मिनिस्ट्री आपसे पूछी जा
सकती है एग्जाम के अंदर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंप्लीमेंट कौन करने वाला है इस एजेंसी को, दैट इज सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसका एम है टू बेनिफिट ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। और यहां पर गाइस उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। So here you can see that collateral free working capital loan of up to ₹10,000 will be provided to these street vendors। और यहाँ पर एक डेट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें टारगेट बेनिफिशियरीज की, तो वो कौन से स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। These street vendors are those vendors which are engaged in the vending business in urban areas and surrounding semi-urban areas and rural areas as on or before March 24, 2020। guys, this particular date is very important जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर दो तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो ये सभी डिटेल्स आपको याद रखना बेहद जरूरी है एंड वी हैव डिस्कस दिस स्कीम इन क्वाइट अ गुड मैनर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एंड कंट्रोल द फ्यूजिटिव डस्ट इन माइनिंग एरियाज, आपको बताने की इसमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने इन्वेंट किया है सिस्टम एंड मेथड फॉर कंट्रोलिंग जनरेशन एंड मूवमेंट्स ऑफ फ्यूजिटिव डस्ट। सी गाइस, जब ऐसे ही किसी कॉज के लिए कोई नया इक्विपमेंट को बनाया जाता है, डेवलप होता है, तो उसको किसने बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज व्हाई वी आर providing such kind of questions for all of you so that you can cover all such kind of questions and you must be ready in the exam to answer such kind of questions successfully। तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूट की जिसने इसको बनाया है, इट इज बेसिकली सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड विच इज बेसिकली in Ranchi, Jharkhand। Okay, so that is what the right answer is। Now move on to the next question। So Prime Minister has inaugurated the 26th National Youth Festival in Hubballi, Karnataka। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने, it is not on the National Youth Festival, the question is basically it is about the theme of the festival। so जब भी ऐसे कोई festivals होते हैं मेजर, तो उसकी थीम क्या रहती है, कौन सा स्टेट उसको सेलिब्रेट कर रहा है। अब ये क्योंकि नेशनल लेवल का है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो कहां पर हुआ था। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द वेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल, विच प्लेस इज होस्टिंग इट। The second thing is the theme of the festival। तो पहली dimension already clear है, that is in Karnataka। The second dimension is about the theme, and the right answer to this question is option B, that is Viksit Yuva Viksit Bharat। That is the right answer to this question। Now moving on to the next question। Indian Railways has decided to launch Ayodhya to Janakpur Bharat Gaurav Deluxe AC tourist train, and here you are required to tell me that which one of the following destination will be an added attraction in this particular tour। दैट इज बेसिकली लॉन्च फ्रॉम अयोध्या टू जनकपुर। सो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी वो लोकेशन है, जो कौन सी attraction है as a which has been included as an added attraction in this particular tour, and the right answer to the question is both Nandigram and Kashi। that is the right answer to this question। Now the next question। so Digital India Startup Hub through the Software Technology Park of India will get India's first center of excellence in the online gaming। और ये कहां पर लॉन्च होने वाली है आपको मुझे बताना है, एंड दिस विल बी लॉन्च्ड बाय मार्च 2023। लेट मी गिव अ स्मॉल हिंट दैट दैट पर्टिकुलर प्लेस इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ मेघालय। सो नाउ आई थिंक दैट लाइफ विल बी इजियर फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज शिलोंग। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है that this is going to be the India's first center of excellence in online gaming, and that is why it is really very important to be covered। I hope this is clear guys। Now the next question। so here you are required to tell me that which of the following has become the first ever district। तो पहला district इंडिया का which has become on the on ground deployment of innovative 5G use cases offered by the startups। तो आपको बताना है कि ये बेसिकली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। सो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको दिखता है कि कोई चीज पहली बार हो रही है, कोई लार्जेस्ट हुआ है, कुछ लॉन्गेस्ट हुआ है, तो ऐसी चीजों को आपको करना बेहद जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो हियर गाइस द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज विदिशा। Now I hope that this is clear to all of you। Now let's move on to the next question। और यहाँ पर the question is the head of the Dash National Oil Company has been named as the president of this year's COP28 climate talk। तो यहां पर अगर आपको पता है कि COP28 कहां पर होने वाली है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं COP26 की, इट वाज हेल्ड इन ग्लासगो। व्हेन आई टॉक अबाउट द COP27, इट वाज बेसिकली हेल्ड इन शर्म अल शेख विच इज एन इजिप्शियन सिटी। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं COP28 की, तो यहां पर इसको कौन होस्ट करने वाला है, इट विल बी होस्टेड बाय UAE। और UAE के जो नेशनल ऑयल कंपनी के जो
चीफ है उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट घोषित किया गया है एज अ सीओपी ऑफ द COP28 climate talks. I hope this is clear to all of you. Now moving on to the next question, and the next question is on the fast petrol vessels. तो ICGS कमला देवी यहाँ पर ऑफिशियली डैश हमारी FPV बनी है, विच इज ऑल्सो द लास्ट वेसल ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. तो अगर आपको पता है कि ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं ये कितने हो चुके हैं, देन इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. So let me tell you that this was the last vessel, that is ICGS Kamala Devi. ये नाम आपको याद रखना होगा from the exam point of view, and when I talk about the right answer to this question, it is option A, that is fifth. So it is basically the fifth फास्ट पेट्रोल वेसल. ओके, और जब हम बात करते हैं कि इसको डिजाइन किसने किया है और उसको डिलीवर किसने किया, इट इज बीइंग डन बाय द GRSE, दैट इज गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टर्स हैज और हैव सोल्ड 3.1% स्टेक्स इन पेटीएम. तो उन्होंने अपने 3.1% स्टेक्स को सोल्ड किया है फॉर USD 125 मिलियन वाया अ ब्लॉक डील. तो आपको बताना कि क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने अपने 3.1% स्टेक्स को यहां पर डाइल्यूट किया है इन द पेटीएम. एंड एब्सोल्युटली राइट, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज अलीबाबा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो FSSAI हैज नोटिफाइड फर्स्ट एवर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, शुगर केन, बासमती राइस, शरबती व्हीट, पोटैटो, मस्टर्ड. तो वो क्या है उस क्रॉप का नाम जिसके लिए पहला रेगुलेटरी स्टैंडर्ड लॉन्च किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने. सी गाइस, सो ऑल द NABARD students kindly note down this particular question because it can be asked in the exam. Okay, because it is a very important development when I talk about the NABARD point of view. So यहाँ पर the right answer to the question is option B, that is बासमती राइस, जिसके लिए FSSAI ने पहला रेगुलेटरी स्टैंडर्ड लॉन्च किया है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ये जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं ये बेसिकली किस पर काम करेंगे, उसका एम क्या है. द एम इज टू एस्टैब्लिश फेयर प्रैक्टिसेस इन द ट्रेड ऑफ बासमती राइस एंड ऑल्सो इट एम्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट बोथ डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच इज वंस अगेन फ्रॉम अ रिपोर्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी यहां पर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि पहले आपने पढ़ा एग्जाम के अंदर कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना बेहद जरूरी है बिकॉज इट हेल्प्स यू टू आंसर द क्वेश्चन इन ए क्विक मैनर. तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन इज ऑन द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 और बहुत सारी चीजें यहां पर दी गई हैं और क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको पब्लिश किया है. तो आप सीधा देख सकते हो कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 पब्लिश द रिपोर्ट डैश. तो यहां पर आप देख सकते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है. इफ यू नो द आंसर यू कैन जस्ट टेक इट एंड यू कैन जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड आउट दीज पर्टिकुलर लाइंस एज वेल इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन. So here you can see that this some kind of important finding of the report is given, but the main question is कि इस report को launch किसने किया है. So this report is being launched by UNDESA, that is what the right answer, that is United Nations Department of Economic and Social Affairs. और एक काफी important finding है इस report की that globally when a child is born in 2021 then the child can expect to live on average to age 71. And when I talk about कि ये जो 71 है, this is basically 25 years more than what that was in 1950. तो 1950 में अगर हम बात करें, so that particular part was basically 46 years and now it has increased to 71 years. So I hope this is clear guys. Now let's move on to the next question, and the next question is once again on a report that is levels and trends in the child mortality. और आपको ये बताना है that as per this particular report how many children died before their fifth birthday in 2021. So these are the kind of questions that you must cover from the exam point of view. And बात हो रही है child mortality के ऊपर, which is once again a very important topic when I talk about the syllabus. So here guys the right answer to the question is option C, that is 5 million. अगर हम बात करते हैं इन estimates की, ये जो estimates हैं ये इसको कौन से ग्रुप ने दिया है. So these estimates are developed by the United Nations Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation. ठीक है जी. So this is what the right part about this particular question is. Okay, I hope that this is clear to all of you. Now let's move on to the next question. Which of the following banks has sanctioned 150 agri drone loans? तो agri drone loans दिए गए हैं for the गरुड़ किसान drone under agri infrastructure fund. तो आपको बताना कि वो कौन सा बैंक है जिसने sanction किए हैं 150 agri drone loans. So absolutely right, it is option C, that is Union Bank of India. So guys, see, these questions are quite direct in nature and that is why we are just giving you the right answers and moving towards the next question. Okay, now let's move on to the next question. So अगला question आपकी स्क्रीन पर from the MOSPI. So MOSPI ने एक डेटा रिलीज किया है. MOSPI stands for Ministry of Statistics and Program Implementation. तो इसके अकॉर्डिंग the question is on the retail inflation. So
ऐसा जो भी डेटा अबाउट द नेशनल इनकम, रिटेल इन्फ्लेशन और जीडीपी के ऊपर अगर कोई भी डेटा लॉन्च होता है, इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की, इट हैज ईज टू 1 ईयर लो ऑफ डैश इन दिसंबर 2022। सो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक का है और आपको एक अप्रोप्रिएट आंसर के साथ इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है in order to answer this question successfully. So let me see who will tell me the right answer, guys. Please tell me the right answer in the comment section. The question is on the retail inflation, the data which is being released by MOSPI, that is the Ministry of Statistics and Program Implementation, and the right answer is option C, that is 5.72%. Now the next question. So here you are required to tell me the name of the organization जिसने agreement sign किया है नॉर्वे बेस्ड H2 कैरियर के साथ। उसका जो एम ऑब्वियसली दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज टू डेवलप अ फ्लोटिंग ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल स्केल एप्लीकेशंस। तो आपको ये बताना है कि वो दो पार्टी कौन सी है जिसके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। एक पार्टी का नाम ऑलरेडी गिवन है, दैट इज H2 कैरियर। द सेकंड नेम इज बेसिकली बीइंग रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड बाय यू इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज Larsen and Tubro. That is what the right answer to this question is. Now the next question. So which of the following companies has appointed Ravi Kumar S as the CEO? So let me tell you here that Ravi Kumar S was earlier serving as the president of Infosys, और यहाँ पर अब आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने इन्हें अपना CEO अपॉइंट किया है। सो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स आर रियली वेरी वेरी यूजफुल एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर कोई मेजर ऐसी अपॉइंटमेंट आती है गवर्नमेंट से रिलेटेड भी, और फॉर एग्जाम्पल इट कैन ऑल्सो बी द इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट एज वेल, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर, द नेम ऑफ द कंपनी जिसने इस पर्टिकुलर पर्सन को अपना CEO डिक्लेयर किया है, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉग्निजेंट। सो गाइस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the recent data released by the Ministry of Commerce and Industry, तो इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट जो था अप्रैल टू दिसंबर 2022 के अंदर, वो आपको बताना है कि वो उसकी ग्रोथ पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, कैसी थी या न्यूट्रल थी। उसके बाद आपको ये परसेंटेज टर्म्स में भी बताना है कि बेसिकली पिछले साल के कंपैरिजन में कितना हमारा ग्रोथ हुआ है। ठीक है जी। सो हियर सम ऑप्शंस आर बीइंग गिवन टू यू, प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। So guys, when I talk about the right answer, when I talk about the growth was basically positive, and when I talk about the growth was of 16.11%. Okay, I hope this is clear, guys. Now let us move on to the next question. So as per the recent data by the Ministry of Commerce and Industry, जो annual rate है inflation का, which is based on the wholesale price index number, it is -% for the month of December 2022. See guys, recently ऐसा data launch हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे important चीज ये है कि अभी ये वाला डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे सिडबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लेटेस्ट डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट दोस्त पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, नाबार्ड एंड सेबी, तो उस टाइम पर जो लेटेस्ट डेटा होगा आपको वो याद रखने की जरूरत है। ठीक है, बट एट प्रेजेंट द लेटेस्ट डेटा इज बीइंग मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन, एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 4.95%. Okay, now the next question. The next question, that WDRA and which of the following entities has signed an MOU to facilitate low interest rate loans for farmers? तो यहाँ पर low interest rate loans farmers को देने वाले हैं, उसके लिए दो entities ने यहाँ पर MOU साइन किया हुआ है। One entity is WDRA, that is Warehousing Development Regulatory Authority, which basically works under the Department of Food and पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर एक काम करते हैं, और जब हम बात करें चेयरमैन ऑफ द WDRA, इट इज बेसिकली श्री TK Manoj Kumar, who is serving as the chairman of the WDRA at present. ठीक है जी। And when I talk about the right answer, the entity with which WDRA has signed this loan, it is basically option B, that is State Bank of India. Now the next question is, Miss Dash R. Bonnie Gabriel has won the Miss Universe 2022. So basically when I talk about R. Bonnie Gabriel, you can see her picture in the slide. So यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो पहले उन्होंने ये टाइटल बेसिकली अचीव किया था, उनको ये टाइटल दिया गया था, उसके बाद ये बनी है मिस यूनिवर्स रिसेंटली। तो ये कौन से कंट्री की मिस बनी थी, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इट इज बेसिकली ऑप्शन डी, दैट इज मिस यूएसए। तो मिस यूएसए का टाइटल इन्होंने पहले ही ले लिया था बाय आर बॉनी गैब्रियल, और अब रिसेंटली वो बनी है मिस यूनिवर्स फॉर ईयर 2022, एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओवर 1200 परफॉर्मर्स विल टेक पार्ट इन द फर्स्ट एवर मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर ये पहला जो मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल होने वाला है। बट द क्वेश्चन इज दैट आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी या मिनिस्ट्री है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। सी दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट विच इज बीइंग टेकिंग प्लेस इन द नेशनल कैपिटल, और यहाँ पर
इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी और मिनिस्ट्री कौन सी है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड। अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड न्यूज में है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में क्या आ सकता है इसके ऊपर, दैट इज इसके चीफ कौन है, इसके अगर जो भी हेड है वो कौन है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडियन कोस्ट गार्ड गाइस, इट इज हेडेड बाय, सो डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड इज वी एस पठानिया जी, ठीक है जी। तो यहां पर ऐसे आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द मिनिस्ट्री, अबाउट द इंडियन आर्म फोर्सेस, and you must answer. And if you don't remember that answer, then kindly go and google it out so that you can just see that what exactly the right answer is all about, ठीक है जी। Now the next question, India is committed to eliminate lymphatic filariasis by which year? So when I talk about this, see guys, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर काफी सारे टारगेट्स है विच आर रिलेटेड टू सम डिजीजेस एज वेल एज, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस का भी टारगेट है, दैट इज 2030, ठीक है, कि तब तक हम एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम द वर्ल्ड द टीबी। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया उसको 2025 तक अचीव करने वाला है। एंड सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट द लिम्फेटिक फिलारियोसिस, तो उसको भी इंडिया ने यहाँ पर सोचा है कि हम पूरे वर्ल्ड से पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। एंड व्हाट इज दैट ईयर? That year is basically 2027. So the right answer is option A, that is 2027. Now the next question. इंडिया ने एमओयू साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट के ऊपर, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ हुआ है ये पर्टिकुलर एमओयू। तो ये जो अग्रीमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट एंड अंडर सी केबल कनेक्टिविटी का, तो ये किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ हुआ है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर गाइस इन द कमेंट सेक्शन। एंड एब्सोल्युटली राइट, द राइट आंसर इज यूएई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, VTB बैंक, सी गाइस रशिया का VTB बैंक है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज रशिया। सी अब सिमिलरली बहुत ही इजी है गाइस, आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर आगे वाला पार्ट तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहली 4 लाइन में ही क्वेश्चन आ गया है, सॉरी पहले 5 वर्ड्स में ही क्वेश्चन आ गया, दैट इज VTB बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपको पता है कि VTB बैंक रशिया का है तो रशिया इज द राइट आंसर, यू कैन जस्ट मार्क द आंसर एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज गाइस सी काफी इंपॉर्टेंट है। 25 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको आरबीआई के एग्जाम के अंदर, एंड दैट इज बेसिकली द टाइम इज वेरी लेस बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी मोर, एंड दैट इज व्हाई you are really required to have a very smart approach in answering such kind of questions. So I hope that this is very much clear to all of you guys. Now let's move on to the next question, which is here on your screen. So NCLT, National Company Law Tribunal, उसने recently allow किया है ownership of which of the following to be transferred to the Jalan Kalra Consortium. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उस particular organization की जिसका ट्रांसफर यहाँ पर अलाउ किया है NCLT ने, the right answer is basically option B, that is Jet Airways. अगर हम बात करें guys NCLT की, it is a quasi judicial authority, इसको establish किया था अंडर सेक्शन 408 of the Companies Act 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 108 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था एनसीएलटी को, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, व्हिच इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज ऑनर्ड 82 बेस्ट एग्रीप्रेन्योर्स विद द अवार्ड्स ऑफ नेशनल यूथ डे। तो क्वेश्चन आपके ऊपर क्या है कि नेशनल यूथ डे को हम कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं? अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज अ हेल्प क्वेश्चन, सो प्लीज टेल मी द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी मुझे बताएंगे क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर इन द कमेंट सेक्शन गाइस। एब्सोल्युटली इट इज ऑप्शन डी, दैट इज 12th ऑफ जनवरी। तो 12th ऑफ जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, एंड इस दिन इंडिया ने ऑनर किया है 82 बेस्ट एग्रीप्रेन्योर्स को। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दीज एग्रीप्रेन्योर्स, दे वर ट्रेन्ड अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे, जब उनको बेसिकली यहां पर ऑनर किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ एमडी संजीव चड्ढा। तो आपको आपके सामने क्वेश्चन काफी सिंपल है, द क्वेश्चन इज बेसिकली कि उनका टेन्योर इंक्रीज किया गया है, कौन है पर्सन? दैट इज संजीव चड्ढा, एंड ही इज बेसिकली सर्विंग एज द मैनेजिंग डायरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके वो यहाँ पर सर्व कर रहे हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, सो द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्शन सी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड इफ यू जस्ट रिमेंबर दैट हु इज बेसिकली प्रेजेंटली सर्विंग एज द एमडी एंड सीईओ of that particular organization, then it is very easy for you to answer that question. So the right answer is Bank of Baroda. Now next move on to the next question. अगला question guys आपकी स्क्रीन पर, but this is a very very important question because once again this basically has world's first in its news. So यहाँ पर question ये है कि world's first Agrifocus satellite will generate $108 million revenue for which of the following countries? तो ये एक बेसिकली कंट्री है जिसने वर्ल्ड का पहला Agrifocus सैटेलाइट को लॉन्च किया है, एंड दिस हैज बीन लॉन्च फ्रॉम द ड्रैगन फ्लाई एरोस्पेस। ठीक है जी, ड्रैगन फ्लाई एरोस्पेस ने इसको लॉन्च किया है। द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट इज
एग्रीसैट 1ZA008, ये उसका नाम है गाइस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द कंट्री, इट इज बेसिकली साउथ अफ्रीका, जिसने कि इसको लॉन्च किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, काफी इजी है गाइस, यहां पर आप देख सकते हो डे है और नीचे यहां पर कुछ डेट्स दी गई है। अ वेरी वेरी इजी अप्रोच है, व्हाट इट इज, दैट इज आपको पूछा है कि ये डे दिया गया है और नीचे डेट्स है, तो दैट इज बेसिकली कि उस पर्टिकुलर डे का ही पूछा गया होगा कि ये बेसिकली किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 14th ऑफ जनवरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इज ऑन अ वेरी वेरी इजी लाइंस एंड अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सी गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन द डिफेंस एक्सरसाइज, ये नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है वरुण। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है कि ये किसके बीच में होती है। सी व्हेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द डिफेंस एक्सरसाइज, आपको तीन चीजें याद रखनी बेहद जरूरी है। फर्स्ट वन इज एडिशन कौन सा था, सेकंड वन इज कौन सी पार्टिसिपेंट्स कौन है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, एंड द थर्ड वन इज वेन्यू क्या है उस एक्सरसाइज का। अगर हम बात करें वरुण एक्सरसाइज की, 21st एडिशन था इसका, ठीक है जी। पार्टीज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड द थर्ड वन इज वेन्यू, वेन्यू की बात करें, इट वाज हेल्ड इन अरेबियन सी, तो अरेबियन सी के अंदर इस पर्टिकुलर और एक्सरसाइज को यहां पर होस्ट किया गया है। और व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर, द नेम ऑफ द कंट्री विद व्हिच इंडिया इज बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज फ्रांस। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, दैट नेवल एक्सरसाइज है तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है। सो द चीफ ऑफ द इंडियन नेवी इज एडमिरल आर हरि कुमार जी, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट द राइट आंसर। तो इसी तरीके से अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी उनके हेड हैं, उनका नाम क्या है, अपने आप से पूछिए एंड जस्ट गो आउट एंड जस्ट फाइंड आउट दैट व्हाट इज द राइट आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वंस अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहां पर वंस अगेन द क्वेश्चन इज अबाउट द रिलीजिंग बॉडी। यहां पर रिपोर्ट का नाम है स्टेट फाइनेंसेस, अ स्टडी ऑफ द बजट्स ऑफ 2022-2023, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट राइट आंसर, इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। दैट इज स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-2023. So all the RBI students, guys, kindly note down that these kind of reports which are being released by the Reserve Bank of India, they are really very important from the exam point of view when I talk about the RBI Grade B exam. ठीक है जी, तो काफी सारी रिपोर्ट्स है जो रिसेंटली लॉन्च की हैं RBI ने. इट कैन बी अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेंड एंड बैंकिंग इन इंडिया, इट कैन बी अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. तो ये सभी रिपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो as per the recent news, RBI's prior approval is must for picking up over dash stakes in the banks. So banks में इतने % stakes लेने के लिए RBI का approval लेना जरूरी है. What is that amount? It is 5%. That is 5% से ज्यादा स्टेक्स अगर बैंक्स के अंदर कोई लेता है तो उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना काफी जरूरी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज पार्टनर्ड विद द वीएफएस कैपिटल टू एक्सटेंड लोन्स अप टू 5 लाख टू द एमएसएमई सेक्टर. तो एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख तक का लोन देने के लिए वीएफएस कैपिटल ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सेडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसीव किया है 26,000 करोड़ लोकोमोटिव ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन रेलवेज? तो यहां पर ऐसी काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. I am not just discussing them at all. I am just telling you the right answer and moving on to the next question. Here इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर इज सीमेंस मोबिलिटी, जिसने बेसिकली रिसीव किया है 26,000 करोड़ लोकोमोटिव ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन रेलवेज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर यू कैन सी दैट एज पर द रीसेंट न्यूज, इंपोर्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव जंप्ड 5 times to $32.9 billion during the period of April to December, making it the fourth largest trading partner of India. See guys, fourth largest trading partner of India वो कौन सी कंट्री है जिसके बेसिकली अगर हम बात करें जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो 5 times इंक्रीज हुआ है? एंड द राइट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज रशिया. This is the right answer. Now the next question. The next question is on the Soul of Steel Alpine Challenge और आपको बताना है कि ये basically this is one of the challenge which has been launched to promote the tourism. और ये जो tourism promote किया जाएगा through this challenge, ये कौन सी जगह पर है? That is what you are required to tell me. Basically this particular challenge, see Soul of Steel, ये जो Soul of Steel से ये कहाँ पर होती हैं? Soul of Steel basically we can just see that this term can be used for the people who are serving in the Indian Armed Forces, and these basically are the people who are basically in the border areas, and that is why the right answer is option B, bordered areas. Now the next question. So once again you are required to tell me the name of the releasing body which has released the report, that is World Employment and Social Outlook Trends 2023. Guys, this is a very 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 important report. तो मुझे जल्दी से बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. जस्ट रिलीजिंग बॉडी आपको मुझे बताना है यहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर ऑफ द रिपोर्ट, दैट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज
ILO, that is International Labour Organization. Now the next question, and guys, this is the last question of our today's session, so quickly tell me what is the right answer. The book Revolutionaries, The Other Story of Sanjeev Sanyal, How India Won Its Freedom, is written by who among the following? See guys, let me tell you that books and authors से ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि उस बुक का ऑथर कौन है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है. तो रिसेंटली रिलीज बुक्स की आप एक लिस्ट बना सकते हो और आप अपना एक पर्टिकुलर पेज बना सकते हो, और वहां पर जब भी आपको कोई नई बुक मिलती है जो रिलीज हुई है, उसके ऑथर का नाम लिखिए, बुक का नाम लिखिए, एंड दैट विल बी द बेस्ट रिवीजन मटेरियल फॉर you when I talk about this particular kind of category, and it will with the help of this you can always fetch 1 or 2 odd marks in the exam. Okay, and now when I talk about the right answer, it is option A, that is Sanjeev Sanyal. Absolutely right, the name of that particular person was already mentioned in this particular question itself. Now guys, that was the last question of the today's session, and if you are still new to our YouTube channel, guys, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us, and you can also join our Telegram channel. अगर आपको हमारे इस सेशन की पीडीएफ चाहिए या फिर बाकी सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप उन सभी को टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपके लिए और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेशन में दिया गया है. ठीक है, एंड नाउ दिस इज द टाइम दैट यू आर रियली गोइंग टू टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली योर स्कोर वाज. सी गाइस, प्लीज टेल मी व्हाट वाज योर स्कोर आउट ऑफ 50. ठीक है जी, एंड गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन जस्ट drop your queries in the comment section. You can just share your queries on hello@edutab.co.in. You can also call us at 8146207241. So guys, I really believe that this session was useful and fruitful to all of you. If you have any queries, you can just share your queries, and if you have liked the session, then you can kindly comment in the section, as well as you can share this session with your fellow aspirants as well, so that they can also get the most out of it. And I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.